Good evening, beta. Yesterday we have discussed about potential at any point due to a point charge. Suppose we are having a point charge plus q here, and this is the point at which the potential is to be calculated. ठीक, and this point is at a distance r from the point charge. तो इसका potential calculate करना, yesterday I told you. Now potential at this particular point, let j, potential at point j will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught, as there is no medium between the point and the point charge. Empty space we have, therefore epsilon naught. Now point charge is q, positive charge, therefore positive, over r. ठीक, this is a scalar quantity, so it will not be having any direction. Fine. Now suppose we have another case. We have a negative charge minus q placed here, and at this particular point, say at distance x from the point charge, हमें टास्क दिया जाता है कि आप पोटेंशियल फाइंड कर दो एट पॉइंट से q. Okay, now potential at point q will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Why we have taken epsilon naught? This is epsilon naught is absolute permittivity of free space, empty space. Okay, because there is no medium, so the space between point and the point charge is free space. Okay, 1 over 4 pi epsilon naught, then minus q, charge is negative, over separation between both, that is x. Okay, if we consolidate this, we get minus q over 4 pi epsilon naught r. As earlier I told you, a positive charge has a positive potential and negative charge has negative potential. Due to this positive, you will be having positive potential, 4 pi epsilon naught r. Is it okay? यहाँ पे this is not r, the separation is x, so here we will be having x. It's okay. Now suppose we are given task, okay, to find potential at any point, okay, and that point, okay, is having influence because of many charges. Let's take an example. Now suppose we have the things like this. This is a square, okay, having each side a. Okay, a, b, c, d. Charge placed here is plus q. Charge placed here is plus 2q. Charge placed here is minus 4q. And charge placed here is minus 3q. Okay, due to these all charges, okay, आपको कहा गया कि find total potential at the point on the intersection of diagonals at this particular point. Then how we will be going? Now what we will be doing, first we will be calculating potential at point O due to charge at A. Okay, potential at O due to charge at A. Charge is positive, therefore potential will be positive. Q over 4 pi epsilon naught and this separation OA. Okay, now this side is A, this will also be A. So applying Pythagoras, we can have
a square plus a square under root. This is length of the diagonal. Okay, we need half diagonal. Okay, so this is root 2a and half diagonal we require. So root 2a by 2, we are getting a by root 2. So OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to a by root 2. Fine. Now potential at O due to charge at A. Now potential at O due to charge at B. B is plus 2q. This will be plus 2q divided by 4 pi epsilon naught and the separation. Separation is A by root 2. A by root 2 and here also A by root 2. Is it okay? Now, potential at point O due to charge at C. C minus 4q over 4 pi epsilon naught because empty space and the separation A by root 2. Is it okay? Now, the fourth charge is remaining, that is minus 3q. Okay, and that charge is negative, so we'll be contributing negative potential, okay, over here. Okay, so potential at O due to charge at D, this is minus 3q over 4 pi epsilon naught A by root 2. Is it okay? Now total potential at O, total potential at O is equal to direct sum, that is VA plus VB plus VC plus VD. Is it okay? Now VA is this plus Q over 4 pi epsilon naught A by root 2. Now, if you concentrate here, this q over 4 pi epsilon naught a by root 2. This is common in all the terms. So, when we all will be adding these things, what we will be getting? Here will be getting plus 1 due to first term, common. Second term will be giving plus 2. Then q over 4 pi epsilon naught a by root 2, that is common. Then third term will be contributing minus 4 and rest all common here. And this term will be contributing minus 3 and okay. Now solving it, this is minus 4 we are getting. Potential at O, potential at O will be equal to minus 4q over 4 pi epsilon naught a by root 2, a by root 2, root 2 in numerator, root 2 in numerator, and finally we are getting v naught is equal to minus 4 root 2 q over 4 pi epsilon naught a, this many volts. Hope this is clear. In the same way, if we will be having any other system, we will be able to calculate the potential. Now, the next task for us is electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Now, electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिग्री ऑफ अनस्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद अ सिस्टम. मतलब एक सिस्टम अनस्टेबल है तो इट विल बी हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी, और एक सिस्टम कंपैरेटिवली स्टेबल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली लेसर होगा. ऑलरेडी हम डिफाइन भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने जो डिफाइन किया था दैट वाज लाइक दिस: इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज सिस्टम.
of any charge system is equal to electrostatic potential energy of any charge system is equal to work done work done in bringing all charges together all charges together from infinity मतलब infinity से क्यों infinity से इसलिए कि when the charges they will be at infinity, okay, all the charges they will be separated, okay, infinity distance पे होंगे, तो then there will not be any interaction, उन charges के बीच में कोई force नहीं होगा, एक दूसरे के field से बाहर होंगे, इस कारण से एक दूसरे को unstable नहीं करेंगे। तो जब आप field से उसको एक दूसरे की field में लेके आओगे, ठीक है ना, इन्फिनिटी से आप एक दूसरे के फील्ड में उसको लेके आओगे, तो देन दे विल बी इंड्यूसिंग अ फोर्स ऑन ईच अदर, दे विल बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर, और फिर वो एक दूसरे को अनस्टेबल या स्टेबल करेंगे। ओके, अट्रैक्शन रिपल्शन होगी ना, तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज या अनस्टेबल, ठीक है, करेंगे। तो यहां पे एडिशनल चीज क्या आएगी, फ्रॉम टुगेदर फ्रॉम इंफिनिटी, कीपिंग them always in equilibrium. Hope the definition is clear. Now, suppose we have a simplest system, two charges, okay, containing two charges. A two charge system we have, okay. Suppose this is a charge Q1 and this is another charge situated at a distance. This is another charge Q2 situated at distance R. Okay, दोनों बोथ आर इन द फील्ड ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर तभी तो फोर्स लगाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होंगे तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं होगा, जब फोर्स ही नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या अनस्टेबिलिटी इंड्यूस करेंगे, है ना। सिस्टम में जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं, ठीक। तो पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के फील्ड में है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, दिस ऑल विल बी अप्लाई, है ना। नाउ कीप दिस चार्ज एज अ फिक्स्ड, ओके, एट ओ, ठीक। इसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आना है, ओके, और इंफिनिटी से यहां तक लेके आने के लिए, ओके, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो शैल वी गो हेड, चलो। नाउ सपोज और Q2 इज समवेयर हियर एट इंफिनिटी, ठीक है, वहां से हम इसको यहां तक लेके आ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके, नाउ मान लिया इस पॉइंट पे it was moving from infinity to this particular point, let this point is our J, okay. Now infinity to J we are bringing that charge Q2, okay, ठीक। Now it was coming closer when it is at this particular point, not stopped moving, okay, it has reached here, okay. Let this particular point is at a distance x, let at this particular point we have concentrated in forces, okay. This point is say P, okay. Now calculating the forces when Q2 is at point P. Now force on charge Q2 plus Q2 when it is at P. P is at a distance x, okay, तो फोर्स कितना होगा F,
will be equal to, force will be plus q1 है ना, q2 over 4 pi epsilon नॉट एंड देन एक्स स्क्वायर। ठीक, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स का तो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को व्हेन इट इज हियर, दिस पॉजिटिव व्हेन इट इज हियर, तो ये उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो दिस वे। ओके, पी एन कर देते हैं, अलोंग पी एन, अलोंग पी एन। ठीक है, नाउ एज this charge will be coming closer, closer, closer and closer. Okay, this force will be increasing. ठीक, this force will be increasing. Okay, now this charge is moving from here to here with uniform velocity. अब इसको uniform velocity mean without acceleration, without acceleration mean net force zero। तो इस net force को zero करने के लिए, क्योंकि force acting on charge is this way ड्यू टू दिस पर्टिकुलर, ड्यू टू दिस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट को ले आते हैं बेटा। एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा देता है, इस फोर्स को कैंसिल कर देता है। ठीक, ओके, तो क्या होगा फिर, अब ये F इज बैलेंस्ड बाय दिस, नेट फोर्स हो गया जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चला आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक्सटर्नल एजेंट जो है, ओके, कितना फोर्स लगा रहा है, इसके ऑपोजिट, इसी के, कैसे, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, फोर्स applied by external agent, okay, force by external agent। ठीक है, now force by external agent is equal to q1 q2 over 4 pi epsilon naught x square उल्टे डायरेक्शन में along pj, along pj। तो इसको एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली इक्विलिब्रियम में हमने उस फोर्स को बैलेंस करके, ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहां से यहां तक चार्ज आया, ठीक, यहां से यहां तक चार्ज आ रहा है, ओके, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, हु इज ब्रिंगिंग द चार्ज कंडीशनली फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक, अब वो एनालाइज करना है हमें। नाउ वर्क इज डन, ओके, इन दिस सिचुएशन वर्क इज done from infinity to j, okay, against force F, ये वाला फोर्स which is in this direction। ठीक है, वर्क इज डन फ्रॉम infinity to j against F which is a variable force, ओके। तो dw, अब क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो इस फोर्स को बनाओ कांस्टेंट। ठीक, फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक जितना लेंथ है उसको इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके, नाउ डिवाइडिंग the whole length in infinitely small parts, small parts each of length, infinitely small parts each of length dx। dx के ऊपर कंडीशन क्या है, dx इज दैट मच स्मॉल, है ना, कि उतने लेंथ के लिए फोर्स चेंज नहीं हो पाता है, फोर्स कांस्टेंट है।
उतने लेंथ के लिए, dx लेंथ के लिए। dx is that small, dx is that small, that force acting for this length, force acting for dx length on charge q2, on charge q2 is constant। ठीक है, मतलब dx लेंथ के लिए अब हमें पता चल गया कि फोर्स कांस्टेंट है। फाइन, तो व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, हम यहां पे dx लेंथ एज्यूम कर लेते हैं p टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को हमने ले लिया z। ओके, नाउ pz, p to z this way, and this length is dx, this length is dx, force against which the work is done, that is this way f, and length moved is dx this way, this is angle theta, f and dx के बीच में 180 डिग्री। तो small amount of work done in taking charge q2 from p to z। now work done in taking, work done in taking, work done in taking q2 from p to z, moving it by dx, moving it by dx। okay, now dw is equal to f dot dx। okay, f for dx में एंगल ऑलरेडी आई टोल्ड यू, this is your f, this is your dx, एंगल थीटा इज 180 डिग्री। ओके, तो क्या होगा, this dw is equal to f dx cos of 180 degree। okay, cos of 180 degrees। now dw, f का वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, f is q1 q2 over 4 pi epsilon naught x square into dx, cos 180 is -1। hope this is clear। now for total work done we will be integrating, now integration will be done with respect to the separation, length traveled। now फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, इस पॉइंट से इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी, एंड यहां तक लेकर आ रहे हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना होगा, r। तो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी इन्फिनिटी टू r फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन, total work done integrating both sides, integrating both sides। ओके, बिटवीन रिक्वायर्ड लिमिट्स। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन लिमिट डिस्टेंस वाला आएगा इन्फिनिटी टू r, q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वेयर dx -1। ओके, नाउ dw से बन गया ये वर्क डन इज इक्वल टू q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -2 इन्फिनिटी टू r। नाउ इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा dx, q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x to the power -2 + 1 over -2 + 1, this is integration rule, x to the power n
integration x to the power n plus 1 over n plus 1 infinity to r. ओके, ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव, -1 आएगा, सेटल कर जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग q1 q2 ओके ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन 1 x to the power -1 infinity to r, and this term is getting equal to q1 q2 over 4 pi epsilon naught, ठीक है, 1 by x infinity to r. ओके, तो 1 by x upper limit will be 1 by r. तो work done is equal to q1 q2 over 4 pi epsilon naught 1 by r minus 1 by infinity. Okay, 1 by infinity is 0, and finally we are getting work done is equal to q1 q2 over 4 pi epsilon naught r. This is work done. Okay, and as per definition, this work done is equal to potential energy. Basically here we have applied work energy theorem. If you concentrate, okay, when both the charges, okay, both the charges, they are out of the field of each other, okay, then potential energy of the system is equal to 0, and when we are bringing them closer together, दोनों को यहाँ पे ले आए, okay, दोनों एक दूसरे के फील्ड में आ गया, जब दोनों एक दूसरे के फील्ड में आ गया तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, तो इनिशियली सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 था और फाइनली जो भी फील्ड में आने के बाद है, तो वहां से इन्फिनिटी से यहां तक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ दैट विल बी इक्वल टू दैट मच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है सिस्टम का, इस कारण से वी से दिस थिंग एज कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. चेंज भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पोटेंशियल एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियली सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 था. q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन गया. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ओके, फॉर अट्रैक्टिव फील्ड this will be negative, for repulsive field this will be positive. Hope you have understood. Thank you. Have a nice day.